Hello students, welcome in our geography class. So let me continue our second chapter, that is major tribes of the world. Our today's topic is Bhil tribe. First of all, I am going to tell you how the word Bhil is originated. According to some scholars, the Bhil word is originated from the Dravidian language Bilu. But some scholars believe that the Bhil word comes from Sanskrit word, and in Sanskrit the meaning of Bhil is to kill, penetrate, or a good archery. योद्धा, शिकार करने वाला या बहुत अच्छा तीरंदाज. According to some Hindu mythology, several kind of stories are related with Bhil tribes. According to Hindu mythology in Puranas, the Bhils are related with Mahadeva's son Nishad. Students, ऐसा माना जाता है कि महादेव के पुत्र निषाद ने महादेव जी के नंदी बैल की हत्या कर दी थी और जिससे महादेव जी नाराज़ होकर के निषाद राज को उन्होंने जंगलों में चले जाने का श्राप दे दिया था कि वो अपना सारा जीवन जंगलों में बिताएंगे, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के वंशज ये भील ट्राइब है. अकॉर्डिंग टू रामायण, द शबरी इज ऑल्सो रिलेटेड विद भील ट्राइब. ऐसा माना जाता है कि शबरी जो थी वही माता शबरी जिन्होंने श्री राम जी को अपने जूठे बेर खिलाए थे दंडकारण्य वन में, उनका भी संबंध भील ट्राइब से माना जाता है. इट मीन्स भील्स आर रिलेटेड विद सेवरल हिंदू मैथोलॉजी. अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टॉड, भील्स आर दोज ट्राइबल पीपल हु लिव्स इन Aravali, Satpura and Vindhyan ranges. So let we start with habited area where the Bhil tribes are found in India. Here one thing is very much clear, that Bhil's tribe are found in the inaccessible mountainous region of India. Bhils are the tribal group of Indian subcontinent. So according to the habited area, Bhils reside in 4 major states: Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. These are the 4 states where Bhil tribes are found. Here I already give the classification of the Bhil habited area according to the district. So in Rajasthan, 4 districts are covered with Bhil tribe. The districts are Dungarpur, Banswara, Udaipur and Chittorgarh. Whereas in Madhya Pradesh, Dhar, Jhabua and Ratlam are the habited area of Bhil tribe. In Gujarat, Panchmala and Baroda are the habited area of Bhil tribe. Whereas in Maharashtra, the Bhil tribes are found in Aurangabad, Ahmednagar, Jalgaon, Nasik and Dhule. So these 5 are the district which is covered by Bhil tribe in Maharashtra. According to the habited area, the climatic region or the situation lies on earth is tropical zone. The Bhils are living in the tropical zone climate. It means they receive hotter climate and nearly the average temperature throughout the year they receive is 40 degree. Later we discuss on it. Let me first discuss you the economic activities done by Bhils.
Students, Bhils are the tribal group, right? And tribes' economic activity is hunting and food gathering. Is it correct? So, because Bhils are also the tribal peoples, so the major economic activity of Bhil tribe is hunting and food gathering. But in India, hunting is now an illegal practice. It is totally banned in India. So basically, more than 80% of Bhil peoples are engaged in agricultural work. So the main occupation is, first of all, hunting. But most of the people, nearly 80% people, are engaged in agriculture. Only disguised hunting are practiced in India now, because hunting is totally illegal, and if anybody catch for hunting, the hard punishment are given by government. So basically 80% population are engaged in agricultural activity. What kind of agriculture are practiced in India? In India, the Bhil tribe practiced jhuming agriculture. Jhuming agriculture is also called slash and burn agriculture. It means the Bhil tribe are doing primitive kind of agriculture activities. They are not using any kind of modern tools, equipments or HYV seed for their cultivation process in their agriculture, right? Two kind of agriculture are practiced by Bhil tribe. The two kind of agricultural practice done by Bhil tribe, that is Dajia and Chimata. The agriculture which is done on land called Dajia, and on mountain called, mountain means hills. So two kinds of agricultural activities practiced by Bhil tribe. Or according to season, we are classify the agriculture, the jhuming cultivation, that is Dajia and Chimata. Dajia agriculture are practiced on the plain region, whereas Chimata agricultural activities practiced on the hilly areas, hilly regions, right? Now food. The staple food of Bhil tribe is maize. Staple means मुख्य खाद्यान्न फसल. Maize, main food crop. The main food crop, the staple food crop of Bhils are maize. But on some special occasions, they also having lapsi.
Most probably the Bhil tribes are vegetarian, but some of the Bhils are non-vegetarian also. They use other several kind of meals in their food like buttermilk, they make lapsi on buttermilk after boiling the grain, maize and etc. Right? And vegetable which is grown in their own field. These are some of the major food of Bhil tribe. Now the next topic is clothes. Students, the Bhil tribe are living in tropical zone, and the tropical area are very hot regions. The average temperature found here is nearly 40 degrees Celsius. So due to hot climate, they just prefer to wear very short dresses. Especially the Bhil male are wear knicker. But according to the shift of modern society, according to the impact of modern culture, they start wearing dhoti, kurta, shirt, pant, and the women are love to wear kurti, kanchli, etc. Right? So ghagra, lugdi, kurti, kanchli are the main clothes of Bhil women. Right? Except the clothes, they decorate themselves by various ornaments also. Now home. In earlier stage, the most of the Bhils are preferring kacha houses, but nowadays they are start living settled life, so they build pakka houses also. It means the settlement are starting इन भील ट्राइब. धीरे धीरे एक जगह पर ग्रुप बना करके रहना अब इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से अब पहले तो क्या होता था, दे यूज टू प्रेफर इन कच्चा हाउसेस, वो खपरेल वाला जो घर होता है घास फूस से बना हुआ उसमें रहा करते थे. लेकिन क्योंकि समय के साथ इनके रहन सहन में लिविंग कंडीशन में चेंजेस आए हैं, तो उस लिविंग कंडीशन में चेंजेस का असर इनके हाउसेस पर भी देखने को मिलता है. Now most of the Bhils are start building their pakka houses made up of bricks and cement. Right? Now weapons and utensils. Let me tell you one more thing, that they build their house in very good manner. इनके अपने घर में हर चीज़ अवेलेबल होगी, जो भी रिक्वायरमेंट वाली होती है, जो डेली नेसेसिटीज से जुड़ी हुई होती हैं, घर को ही उस तरीके से डेवलप करते हैं. जैसे किचन, इनका पूजा घर, ये सब हर भील ट्राइब के घर में मिलेगा. इनका अनाज का भंडार, जो स्टोर हाउसेस वगैरह होते हैं, ये 3-4 चीज़ें तो घर में होना आवश्यक ही है. इट इज़ नेसेसरी. Right? So now weapon and utensils. The Bhil tribe basically use bows and arrows for hunting. So the bows and arrows are the main weapon used by Bhil tribe. Right? And they use utensils made up of mud. ज़्यादातर जो भील हैं वो, अगर हम वेपन्स की बात करें तो बोज एंड एरोज का इस्तेमाल करते हैं, और यूटेंसिल्स की बात करें तो मिट्टी के बने बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं. इनके घर में वो पीसने वाली चाकी वगैरह ये सब चीज़ें नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी. राइट? यानी कि जिसे ग्राइंडर वगैरह हम लोग कहते हैं. नाउ सोसाइटी एंड कल्चर. So according to the society and culture, Bhils are originated इन पैट्रिकल सोसाइटी. पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी होती है उसमें रहना पसंद करते हैं.
व्हाट इट मीन्स, जो परिवार का मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है और बेसिकली द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट. एंड एवरी क्लैन हैविंग अ लीडर. इनका 10 हाउसेस का एक क्लैन होता है, एक विलेज होता है, और उस एक विलेज का या उस एक क्लैन का, एक समूह का, ग्रुप का एक सरदार होना आवश्यक है. एंड दे एवरी क्लैन हैविंग अ सिंबल, आइडेंटिफिकेशन सिंबल एज वेल. हर समूह का अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कि उस क्लैन का एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये क्लैन जो है इस आइडेंटिफाई मार्क से जाना जाएगा, राइट. एंड इवन एवरी भील, चाहे वो भील ओल्ड हो या यंग हो, ही इज़ हैविंग अ वाइफ ऑल्सो. हर भील की अपनी पत्नी ज़रूर होती है, चाहे वो भील बुज़ुर्ग हो या फिर यंग हो. ये इसकी एक ख़ास बात है, ठीक है. एंड बेसिकली द अरेंज मैरिज एंड किडनैपिंग मैरिज आर वेरी फेमस इन भील ट्राइब. दे जनरली polygamy marriages are also found in Bhil tribe. What is the meaning of polygamy? Polygamy means multiple marriage. कई बार एक से ज़्यादा शादियाँ भी भील ट्राइब के लोग कर लेते हैं, मल्टीपल मैरिज. एंड वन मोर थिंग, अ अमाउंट गिवन बाय ग्रूम फैमिली टू द ब्राइड फैमिली. एक अमाउंट है जो कि ग्रूम परिवार की तरफ से ब्राइड परिवार को दिया जाता है और उस वैल्यू को धप्पा कहा जाता है. दैट वैल्यू इज धप्पा. अमाउंट और वैल्यू पेड बाय groom to the bride, right. One important marriage system also practiced in Bhil tribe, that is called Gol Gudhedo. Gol Gudhedo is a kind of marriage जिसमें ग्रूम को अपना बोल्डनेस, अपना एक तरीके से जो कहते हैं ना कि अपनी शौर्यता दिखानी पड़ती है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना ज़्यादा साहसी है. तो इसके लिए एक प्रैक्टिस होती है, जैसे आमतौर पे जो स्वयंवर होते हैं वहाँ पर, और इसमें मेल जो है अपने ताकत का प्रदर्शन करता है और फिर फीमेल चुनती है अपने वर को. एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड गोल गुधेड़ो. So the society and culture are very differentiative. They are agricultural practiced peoples, so they are very much heavy believe in agricultural work. After sowing the seeds and at the time of harvesting they celebrate. एक बार तो बीज बोने के समय ये सेलिब्रेट करते हैं फसल को, और एक बार जब फसल तैयार हो रही होती है तब भी ये नाच गा करके सेलिब्रेट करते हैं. यूजुअली दे dances and the major festivals which is celebrated by Bhil tribe are Holi and Diwali. Holi and Diwali they used to prefer celebrate most probably. They cremate their body, dead body. ये अपनी dead body को cremate करते हैं, जलाते हैं, ठीक है. यानी कि they follow the rituals just like Hindu mythology. And the famous fair organized by the Bhil tribe at बेनेश्वर धाम. फैब मंथ में, फैब मार्च के समय में एक मेला आयोजित होता है, एक फेयर ऑर्गेनाइज होता है बेनेश्वर धाम पे. बेनेश्वर धाम इज़ द प्लेस वेयर त्रिवेणी संगम इज़ ऑर्गेनाइज. एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पर 3 नदियाँ सोम, माही और जाखम आकर के मिलती हैं, और उसी जगह पर फेयर ऑर्गेनाइज होता है बेनेश्वर धाम का. और उस फेयर में भील ट्राइब ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं. बेनेश्वर धाम को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, त्रिवेणी. एंड त्रिवेणी इज द प्लेस वेयर 3 rivers
meets, and these three rivers are Som, Mahi and Jakham. These are the three rivers, right? The Bhils are worshipper of basically two gods. They are worshipper of Vishnu, Shiva, more gods actually. They are worshipper of nature, they are worshipper of Lord Krishna, they are worshipper of Lord Shiva, because the Beneshwar Dham, at Beneshwar Dham the fair organized at the time of Mahashivratri, so they are very much a good worshipper, a big worshipper of Lord Shiva also. And except the Lord Shiva, they worship Lord Krishna too. Now, what changes arrived in Bhil tribe after the contact of modern culture? What kind of relation developed after contacting with modern culture? Nowadays, Bhil tribes are totally changed. They adopt the modern culture according to the time. In India, hunting is banned, and इस हंटिंग बैन होने का असर सीधे तौर पर भील ट्राइब्स पर देखने को मिलता भी है. व्हाट हैपेंड एक्चुअली द आफ्टर बैन hunting ban they start engaging in agricultural activities. After getting the knowledge, even government also try to encourage them, try to develop them, and for development government give them facilities like good education facility, medical facility, and due to these facilities they improve themselves. गवर्नमेंट लगातार कोशिश करती है कि इनको एनहेंस किया जाए, इनको डेवलप किया जाए, और उस डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स चलाती है. एंड ड्यू टू दीज पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दे ऑल्सो ट्राई टू डेवलप देमसेल्फ. नाउ मोस्ट ऑफ द भील ट्राइब्स getting knowledge, and after getting knowledge some of the Bhil tribes are busy in tertiary sector activities also. They are doing service sector work too, right? So their society is taking a very variety of shape day by day, right? Now this is all about Bhil tribe. Hope you understand this topic well. Now in my next video we are going to discuss about the Gond tribe. Till now, thank you and have a nice day. Hope you understand the all topic very well. If you are having any kind of query, any kind of doubt, you can call me. Thank you.